ये इस वक्त की लाइव तस्वीर है आपके सामने, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख इस वक्त स्क्रीन पर हैं। उनके हाथ में टॉकिंग पॉइंट्स हैं दोनों के जो हम लोग यूज करेंगे। तो अभी इजराइल में जो सिचुएशन है दीपक सर, कैसे आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, कैसे आप इन्हें डिस्क्राइब करेंगे? द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड, आप जो मर्जी उसके बारे में कहिए, इट स्टिल इज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली सबसे ज्यादा शक्तिशाली है यूनाइटेड स्टेट्स। ये टोटल स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट है और इजराइल का हौसला इससे बहुत बिल्कुल क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं जरा। Unequivocal support you have given Israel during these trying times, a support that reflects the overwhelming will of the American people. I've seen your support मुश्किल की घड़ी में हमें जो समर्थन दिया है उसके लिए हम आभार जताते हैं। Of cooperation that we have had since the beginning of this war, a level of cooperation that is truly unprecedented. जिस तरीके का समर्थन और सहायता आपने दी है वो अभूतपूर्व है। We see that support in your steadfast commitment to provide Israel with the tools we need to defend ourselves. We see that support. आपने हमें जिस तरीके के उपकरण, जिस तरीके की सहायता मुहैया कराई है उसके लिए न केवल हम आभारी हैं बल्कि हम उसे एक मजबूत समर्थन की तरह देखते हैं। और केवल ये शब्दों की सहायता नहीं है, हम इसे एक्शन में भी अपने साथ देख रहे हैं। In the moral clarity that you have demonstrated from the moment Israel was attacked. और इजराइल जब से बना है उसके बाद से अमेरिका उसके साथ खड़ा रहा है। And the forces of barbarism. You described what Hamas did as sheer evil. जो कुछ हमास ने किया है वो पूरी तरीके से Hamas murdered children in front of their parents. बुरा है। And parents in front of their children. They burnt people alive. They raped and murdered women. They beheaded soldiers. They searched for the secret hiding places where parents hid their children. And just imagine, Mr. President, हमास के आतंकियों ने घरों में घुसकर उन जगहों पर भी लोगों को तलाशा जहां लोग शरण लेने के लिए छुपे हुए थे। As the monsters discovered, found out their hiding places. ये राक्षसी कार्रवाई थी। Hamas kidnapped women, children, elderly, Holocaust survivors. I know you share our outrage on this, and I know you share our determination. हम ये जानते हैं कि हमारे इस गुस्से के अंदर आप भी साझेदार हैं। On October 7th, अक्टूबर 7 की सुबह Hamas murdered हमास ने 1,400 Israelis, maybe more. 1400 से ज्यादा This is in a country of fewer than 10 million people. This would be equivalent to over 50,000 Americans murdered in a single day. अगर अमेरिका की आबादी में देखें तो मानिए जो कुछ 7 अक्टूबर में इजराइल में हुआ उसका मतलब है अमेरिका में करीब 50,000 is another day that will live in infamy. Mr. President, you rightly said that Hamas is worse than ISIS. मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमास आईसिस से भी खतरनाक है, बुरा है। हमास नियो नाजी है, नाजियों की तरह है। United to defeat the Nazis and united to defeat ISIS. The civilized जिस तरीके से हम नाजियों को हराने के लिए, आईसिस को हराने के लिए एकजुट हुए थे, उसी तरीके से हम हमास को हराने के लिए भी एकजुट हैं। And we will defeat Hamas and remove this हमास को हरा कर रहेंगे और उसको अपनी जिंदगी से खत्म करेंगे। The forces of civilization will prevail for our sake, for your sake, for peace and security in our region and in the world. ये दुनिया में हमारे क्षेत्र के अंदर शांति और व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है कि हमास को हराया जाए। There's only one thing better than having a true friend like you standing with Israel, and that is having you standing in Israel. Your visit here is the first visit of an American president in Israel. इजराइल के लिए दोस्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है। It is deeply, आप इस समय इजराइल के अंदर मौजूद हैं, हमारे साथ खड़े हैं। It speaks to the depth of your personal commitment to Israel. It speaks to the depth of your personal commitment to the future of the Jewish people and the one and only Jewish state. So I know I speak for all the people of Israel. मैं जानता हूं कि मैं इस समय इजराइल के सभी लोगों की तरफ से बोल रहा हूं। Thank you for standing with Israel. धन्यवाद राष्ट्रपति जी, और इजराइल के लोगों के प्रति की तरफ से मैं आभार जताता हूं। Mr. Prime Minister, thank you very much.